सर वन थिंग्स एंड लाइक आप मतलब मोस्टली आप एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन से हैं, लाइक मैनेजमेंट डोमेन से आपने Correct. हायरिंग में भी आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है एंड काफ़ी अच्छी स्केलेबिलिटी रही है आपकी। तो मेरा क्वेश्चन था लाइक करंट टाइम में जॉब का जो सेगमेंट है इंडिया में क्या ओवरऑल वर्ल्ड में है, लाइक टेक आईटी डोमेन में जो जॉब चल रही है, जॉब में रिसेशन है एंड जॉब क्राइसिस है मार्केट में, इसका क्या इफेक्ट है, मतलब क्या इम्पैक्ट होने वाला है, लाइक हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या Web3 के आने से Web3 की वजह से काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट होगा इस डोमेन में? When it comes to recession and your question was attrition and layoff something, देखो this is going to stay. ये ऐसा नहीं है कि ये cyclical होता है. And Hirect being a hiring app, I had seen that very closely. ये cyclical होता है. It comes and goes, comes and goes, comes and goes. So every 2 years you'll see a phase comes, a new technology comes, people start adopting those technology, and the older technology gets washed away, okay, and written off. तो ये process चलता रहेगा. Now the question is, someone who is getting into this and trying to build their career into Web3 or a new technology, there is no point in time when you will not see that the demand of the engineers or the demand of the developers have gone down. सिर्फ इतना हो सकता है कि कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, but demand is always there, and somebody who is very good in coding, be it a front end, back end, full stack, or whatever technology AI ML they are working on, they will always be in demand. When I mean to say demand, what we realized is आपके फर्स्ट फ्यू इयर्स में ना, अप्लाई टू योरसेल्फ, अप्लाई टू योर फ्रेंड्स एंड से everybody has to concentrate on building their understanding about how to go about learning technology, how to go about coding, how to go about creating a product for masses. अभी हो क्या रहा है कि फर्स्ट लर्निंग फ्यू इयर्स में ही हाउ टू गो अबाउट बिल्डिंग करियर पे लोग का ज्यादा ध्यान है. आई डोंट नो कितने काउंसलर आके उनको समझा देते हैं कि आप इंटरव्यू पे काम करो, इस पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन करो, बट उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यू शुड नॉट बी एक्सपर्ट इन व्हाट यू डू एंड यू शुड नॉट नो योर कोडिंग स्किल्स, और गिव सम टाइम टू योरसेल्फ बिफोर यू टेक अ लीप. अगर फर्स्ट टाइम से ही आप लीप लेते हो तो देयर इज नो हार्म, यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी वर्क, बट देन यू हैव टू स्टिक विद इट, इज व्हाट आई से. Yes. So recession, to answer your question in short, recession is a part of the cycle. It is going to stay. It is going to come. Doesn't mean that all those who are thriving cannot survive. We have been surviving, and I don't think I have seen subprime crisis. I have seen a time during 2016-17, which is the demonetization time. Then we have seen what is that recently COVID time, and we have been surviving all. Correct? सब तो देख ही लिया ना हम लोगों ने.